ओके हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग ये पढ़ने वाले, बट बिफोर दैट प्लीज लेट मी नो कि मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है या नहीं। ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं, चेक कर लो बच्चों, एंड देन वी कैन क्विकली स्टार्ट विद दिस। जस्ट चेकिंग द ऑडियो एंड वीडियो। ऑल राइट, सही है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। ओके, that's great, that's okay. So hello everyone, let me start this session by introducing myself. I'm Sajal and आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं मार्च 2018 का क्वेश्चन पेपर। तो आप बोलोगे मैम कि बीच में हमारा कुछ सिलेबस चेंज हुआ था, पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, तो आप 2018 के क्वेश्चन पेपर क्यों करा रहे हो? तो लेट मी टेल यू, हमने स्पेशल क्लासेस में, लाइक अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में एज वेल एज प्लस क्लासेस में, we did a lot of questions related to maths and related to this particular PYQ sessions. And what I have noticed, वैसे हमारे YouTube चैनल पर भी there was a series going on जहाँ पर मैं चैप्टर उठा रही थी, एंड लास्ट 10 years के क्वेश्चन पेपर्स में से मैं क्वेश्चंस लेके उस पर्टिकुलर चैप्टर के, एंड आई वाज सॉल्विंग इट अलोंग विथ यू गाइस। तो पहली बात तो मैं आपको एक एक चीज क्लियर बता दूं कि पोर्शन चेंज नहीं हुआ था आपका, जस्ट जीएसटी एंड ऑल ऐड किया था। ओके, अब अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने टेंथ बहुत ज्यादा पहले नहीं दिया है, लाइक अराउंड आई गेव टेंथ इन 2011। तो उस टाइम पे भी यही टाइप के क्वेश्चंस आते थे जो इम्पोर्टेंट थे। उस टाइम पे भी हम लोग को भी बोला था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। सो महाराष्ट्र बोर्ड का कैच ये है कि इफ यू रेफर द पीवाईक्यूज, ओके, यू आर लाइक मिनिमम 60% तो पीवाईक्यूज से ही आता है आपका पेपर। ओके, देयर इज दिस बुक कॉल्ड 21 सेट, अपेक्षित बोलते हैं उसको। सो उस बुक में यही है, पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस है, ये है वो है, बट व्हाई बाय द बुक व्हेन यू कैन गेट एवरीथिंग फॉर फ्री ऑनलाइन? ओके बच्चों, सो दैट इज द रीजन आई एम डूइंग दिस 2018 का क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पेपर पैटर्न वो सब तो आपको पता ही है। ओके, एंड इफ नहीं पता है बच्चों, अपकमिंग मंथ में, जनवरी में, अपकमिंग ईयर में, तो बच्चों पूरा मंथ वी विल बी फोकसिंग ओनली ऑन पीवाईक्यूज एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब के सेशंस होने वाले काफी सारे, हमारे स्पेशल लेक्चर्स होने वाले काफी सारे, एंड प्लस लेक्चर्स होने वाले काफी सारे, फोकसिंग मेनली ऑन योर एग्जाम्स। ओके, तो बच्चों लेट मी स्टार्ट बाय एक्सप्लेनिंग टू यू, जस्ट अ सेकंड, let me start this by explaining to you about our Unacademy platform. Okay बच्चों, तो जो हमारा जो Unacademy का प्लेटफॉर्म है, इसमें we take 3 types of lectures. Technically we take only 2 types of lectures. Third type is the YouTube lectures. Okay, तो इसमें बच्चों 2 टाइप के लेक्चर्स होते हैं। The very first is the free live classes. इसको हम लोग स्पेशल क्लास भी बोलते हैं। Okay, now these free live classes are on the Unacademy app. ये absolutely free होते हैं। You just need to download the Unacademy app, and उसके बाद आपको बस आपका नॉर्मल जैसे आप फेसबुक इस पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हो, जस्ट फोन नंबर और ईमेल आईडी डाल के ओटीपी आएगा, यू जस्ट हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। आफ्टर दैट आपको पूछा जाएगा कि आपका गोल क्या है, महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 है या कोई भी गोल हो आपका, यू जस्ट पुट दैट एंड यू आर गुड टू गो। काफी सारे फ्री लाइव लेक्चर्स होते हैं, स्पेशल क्लासेस होते हैं,
and you can watch those for absolutely free. If you want to watch my free live lectures, उसकी link description box में दी गई है. Okay, तो उसकी link बच्चा description box में दी गई है. And yeah, apart from this, there are plus classes. Now these plus classes, these are the ones that are paid for. So there's only a limited number of lectures that we are able to take. Okay, bacha, we are able to take only a limited number of lectures for free, right? So plus classes में you basically subscribe to Unacademy and then you are able to watch the plus classes. But वो platform same होता है. So free, I would suggest कि free lectures देख लो आप. Okay, get to know कि कैसे lectures होते हैं कैसे नहीं, and then you can decide if you want to subscribe. अब plus classes में बच्चों आपके क्या क्या benefits है, let me tell you. Plus classes में सबसे पहले तो आपके जो courses होते हैं, courses या batches होते हैं, काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं. जैसे हमारी बूस्टर बैच चल रही थी. बूस्टर बैच मेनली फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर पोर्शन, आपके डाउट सॉल्विंग, आपके बेसिक सॉल्विंग, इस पे फोकस कर रही थी. नाउ देयर विल बी अनदर बैच, आई थिंक फ्रॉम द एंड ऑफ जनवरी देयर विल बी अनदर बैच जहाँ पर आपके पीवाईक्यूज एंड इम्पोर्टेंस वो सब चीजों पे फोकस किया जाएगा. तो काफी वेल स्ट्रक्चर्ड बैचेस होते हैं. सेकेंड थिंग यू गेट इज live quizzes and practice tests. लाइव क्विजेस होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, तो काफी सारे होते हैं ये भी. एंड सिंस दीज आर लाइव, आप बहुत सारे बहुत बड़े ऑडियंस के साथ आप compete करते हो, तो काफी मजा भी आता है इसमें. द थर्ड थिंग यू गेट कि आपके जो भी लेक्चर्स होते हैं प्लस, दीज आर लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड. अब इसका बेनिफिट क्या है मैं बताती हूँ आपको. कि लेट्स सपोज राइट नाउ यू आर वाचिंग अ प्लस लेक्चर एंड उसमें आपने कुछ पढ़ा, तो सेम टू सेम लेक्चर जो लाइव था आपका, ओके, ऑल दीज लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड. सो दीज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लेट्स से आपको एक साल पहले का लेक्चर देख, तो भी आप देख सकते हो, बिकॉज ऑल ऑफ दीज सेशंस, जो भी सेशंस आप अटेंड करोगे, दीज आर रिकॉर्डेड. जो भी पीपीटी हम यूज कर रहे हैं, इवन जो भी हम लोग लिख रहे हैं, आफ्टर द लेक्चर यू आर एबल टू डाउनलोड दैट. Okay, so this is one of the benefits. And मेरा फेवरेट है डाउट सॉल्विंग वाला प्लेटफॉर्म. नाउ नॉट द प्लेटफॉर्म एक्चुअली, फ्री लाइव लेक्चर्स में, लाइक जैसे आप यूट्यूब पे चैट करते हो, राइट, यू सेट द लाइव चैट, वैसे ही लाइक अनअकैडमी के प्लस क्लास में, फ्री क्लास में भी यू आर एबल टू चैट, नो डाउट. बट कभी कभार ना बच्चों को डाउट्स होते हैं एंड द क्वेश्चंस आर वेरी बिग, तो कितना ही टाइप करोगे. ओके, एंड समटाइम्स क्वेश्चन में डायग्राम होता है, तो हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टू मी. ओके, तो देर इज दिस डाउट सॉल्विंग का एक पैनल है, वहां पर यू आर एबल टू सेंड मी अ फोटोग्राफ, लाइक स्क्रीनशॉट हो, कैमरा से क्लिक करो, यू आर एबल टू सेंड द एजुकेटर a photograph of whatever doubt you have and we get a clear idea कि exactly कैसे टाइप का क्वेश्चन है, exactly कौन से क्वेश्चन है. What is the date and time, मैम? बच्चा किस चीज की पूछ रहे हो? ईशा, let me know. ओके, तो ये होता है डाउट सॉल्विंग में. नाउ वी, आई टेल यू हाउ आई यूज दिस प्लेटफॉर्म. डाउट्स तो सॉल्व होते ही है, नो डाउट, बट ये पर्टिकुलर थिंग आई यूज इट विथ माय स्टूडेंट्स. अब मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, ओके, तो मैथ्स में स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन दो योर आंसर इज राइट. या कई बार आपका आंसर क्यों गलत आ रहा है ये बच्चों को समझ में नहीं आता. मैम मैंने तो वही किया जो आपने बताया. तो व्हाट आई टेल माय स्टूडेंट्स इज, ओके, वैसे तो मैं सॉल्व कर ही रही हूँ, बट हाउ अबाउट यू सॉल्व इट. ओके, हाउ अबाउट यू सॉल्व इट एंड मुझे आपका सोल्यूशन भेज दो. तो ये सिंस यू आर एबल टू सेंड अ फोटोग्राफ ऑफ व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, बच्चे मुझे अपने लिखे हुए सॉल्यूशंस के फोटोज भेजते हैं एंड मैं स्टेप बाय स्टेप करेक्ट करती हूँ. सो दिस इज वन अनदर मेथड दैट आई यूज दिस पर्टिकुलर थिंग. ओके, और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सो व्हेनेवर यू वांट टू take a subscription, go ahead. I would highly recommend it using a plus subscription. Now if you use the code SB05,
you get a very good discount also. Okay, on your plus subscriptions. फ्री लाइव क्लास बच्चा अलग अलग टाइमिंग होते हैं. ओके, अलग अलग टाइमिंग होते हैं, बट जो फ्री लाइव क्लास हो चुके हैं, ओके, इसे यू आर एबल टू वॉच दोस. एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पुराने मेरे लेक्चर्स हुए हैं, जैसे कि हमने स्टैटिस्टिक्स की किया, जूम मीन मेथड, स्टेप डिविएशन, मीडियन, हिस्टोग्राम, पाई डायग्राम, तो ये सारे लेक्चर्स भी आप देख सकते हो. ओके, सबकी लिंक्स दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एक मिनट. ओके, सबकी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड एकदम इफ यू ओपन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एट द एंड दिया गया है अटेंड फ्री स्पेशल लेक्चर्स ऑफ क्लास 10 मैथ्स. ओके, सो आफ्टर दिस क्लास यू कैन गो अहेड, डाउनलोड द अनअकैडमी. आप देख लो आप फ्री लाइव लेक्चर्स कैसे होते हैं कैसे नहीं. देन यू कैन डिसाइड ऑन टेकिंग द प्लस सब्सक्रिप्शन. ओके, so let's move ahead, let us move ahead with our question paper. ओके, जैसे कि मैंने बताया, फोकस ऑन द क्वेश्चंस एंड नॉट ऑन द पेपर पैटर्न एंड ऑल. वो तो चेंज होगा नहीं होगा, डजंट मैटर. अपना कंसेप्ट क्लियर है, दैट मैटर्स. क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, दैट मैटर्स. ओके, तो इफ यू टेक 2018 के 2008 का क्वेश्चन पेपर भी आप ले लोगे, तो भी उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले. ठीक है, let us start with the very first question. क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखो. अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस. बोला है एनी 5, 1 मार्क ईच. बोला है एनी 5, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल 6 ऑफ देम. ठीक है. फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एपी 4, 9, 14. तो लेट मी show you how to present your question paper. This is question number 1 का 1 ना, so you write it like this. Question number 1 का 1, that's it. ए होगा तो ए यहाँ लिखना है, बी होगा तो जो भी है यहाँ पे लिखना है. अब बहुत बच्चे बहुत लाइन लाइन ड्रॉ करते हैं. I've seen स्टूडेंट्स कि उनका बस चले तो दे ड्रॉ अ लाइन हियर, फिर दे विल ड्रॉ अ लाइन हियर, फिर दे विल ड्रॉ अ लाइन हियर. ऐसा सब करने की कोई जरूरत नहीं है. इट इज ओनली गोइंग टू लुक शादी. ओके, इट इज ओनली गोइंग टू मेक कि बहुत तामझाम है, सॉल्यूशन कुछ नहीं. सिंपल जितना रखोगे पेपर उतना बस रहेगा. हाँ, इफ देयर इज रफ वर्क, जो पेज पे आप जो भी सॉल्व कर रहे हो उसका अगर रफ वर्क होगा तो ही यहाँ पे ड्रॉ करो, अदरवाइज उसकी भी जरूरत नहीं. लास्ट पेज है आपका, डू द रफ वर्क देयर, नोबडी इज गोइंग टू जज यू. ठीक है, तो एपी क्या है हमारा, 4, 9, 14. let us write this. Given AP is 4, 9, 14. आगे क्या है, बस ऑन एंड ऑन. ठीक, अब यहाँ पे ए क्या है हमारा, 4 है. बी क्या आएगा, P2 minus P1, या फिर A2 minus A1, whatever you prefer, which is 9 minus 4, which is 5. ओके, डी के लिए हम और एक बार लेंगे. अच्छा, एपी गिवन है तो और एक बार लेने की जरूरत है. ठीक है, तो डी हमारा 5. तो A4 है, D5. मैम बोर्ड एग्जाम में रफ सॉल्विंग कहाँ करना होता है, ईशर? एक तो देखो, रफ वर्क वाला एक तो आपके आंसर पेपर के आंसर बुकलेट के लास्ट पेज पे आप पूरा पेज रफ वर्क के लिए यूज कर सकते हो, या फिर अगर लाइक लेट से पूरा पेज है आपका, पूरे पेज में कहीं भी रफ वर्क यूज नहीं हो रहा है, तो डोंट ड्रॉ ऑल दिस. ओके, एक छोटा 1 इंच का 1.5 इंच का साइड में आप क्या करो, रफ कॉलम एक बना दो.
रफ वर्क के लिए। अब यहाँ पे रफ वर्क करोगे तो भी ऐसे ऐसे इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक, ऐसे नहीं करना है आपको। ऐसे सब गंदगी नहीं फैलानी, इसमें कटिंग इसमें कटिंग, इट इज गोइंग टू लुक बैड। अगर नीट एंड क्लीन कर रहे हो तो ये अपने पेपर पे रफ करो, अदरवाइज लास्ट पेज। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस वन। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास डी है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है बेसिकली, नेक्स्ट टू टर्म्स है कि नहीं, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फाइंड क्या है हमारा, T4 एंड T5। चलो लेट्स फाइंड T4। हमारा फॉर्मूला क्या है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, P of n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इम्पोर्टेंट है, हमने कुछ इम्पोर्टेंट लिखा, डब्बा बना दो इसके अराउंड। ठीक है, अब हमको T4 फाइंड आउट करना है। वी राइट T4 इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी, विच इज a क्या है हमारा 4 है, प्लस 4 माइनस वन क्या है 3 है, 3 इंटू डी क्या है 5। सो 4 प्लस 5 3 जा 15, तो 19 मिला। So therefore we write T4 is equal to 19। इंपॉर्टेंट है, डब्बा बना दो। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है T5 है कि नहीं। सो यू राइट T5 इक्वल्स सेम a प्लस 5 minus 1 into d, which is 4 plus 5 minus 1 is 3 into d is 5। 5 minus 1 4, मैंने गलती से 3 लिख दिया। ओके, 4 5 are 20, so 4 plus 20 is 24। तो लास्ट में क्या लिखोगे, T4 is 24। आपको लगेगा यहाँ पे आपका आंसर खत्म हुआ, नहीं खत्म हुआ, बहुत मेहनत करनी पड़ती। ओके, सो एंड में क्या लिखोगे, therefore the next two terms of the given AP are 19 and 24। That's it। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आई कैन जस्ट टिक मार्क दिस ऑफ। सो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेट वेदर द गिवन इक्वेशन is quadratic or not। Yes, what is the question? State whether the given equation is quadratic or not, give reason। 5 upon 4 m square minus 7 equals to 0। तो what do you think, क्या ये quadratic equation है या नहीं, और अगर है तो रीजन क्या होगा, रीजन के साथ देना। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड वन। अब यहाँ पे वापस क्वेश्चन नंबर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट इट 2 डायरेक्टली। सबसे पहले तो क्या है, 5 अपॉन 4 m square minus 7 equals to 0। Here what you can write, here maximum power order और index जो आपको लिखना है is of the variable is 2। मैक्सिमम पावर 2 है। ऑल्सो ए क्या है 5 अपॉन 4, बी क्या है 0 इफ यू कंपेयर इट विथ नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड सी क्या है -7 आर रियल
numbers are real numbers और क्या है, and a is not equal to 0 है ना, a not equal to 0, 0 होता तो m square की वैल्यू चली जाती. So since this is not equal to 0, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, वैसे टेक्निकली आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहिए. So it is a quadratic equation in variable m. So it is a quadratic equation in variable m. That's it. Have you guys understood this one? चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये सेकंड भी हो गया. If b of x equals to 25, d equals to 5 are the values of determinants of certain simultaneous equation in x and y. Find x. अब ये भी बहुत सिंपल है. यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन क्या है, b of x and d. तो d of x क्या है 25, d है 5. तो फाइंड क्या है x और सॉल्यूशन क्या है. x क्या होता है पता है आपको, d of x अपॉन d. ये हमारा फॉर्मूला है. यूज दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. x इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करो 25 अपॉन 5, 5 1 जा 5 5 जा, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 5. सो सिंपल. नेक्स्ट फाइंड आउट करो. चलो नेक्स्ट क्या है, if s equals to 2 4 8 9 10 मतलब a equals to सैंपल स्पेस ये है, a ये है, आपको a डैश फाइंड. सिंपल लिखो पहले सैंपल स्पेस, s equals to 2 4 6 8 10 12. तो सैंपल स्पेस क्या है 2 4 6 8 10 12 और a क्या दिया हुआ है 4 8 12. a dash contains all the elements in S except those in A. मतलब A के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस में वो सब A डैश. सो देयरफॉर A डैश क्या हो जाएगा 2 6 10. क्योंकि देखो 4 8 और 12 तो है A, तो 2 6 10. Okay, let's go to the fifth one. Write any one solution of equation x plus 2y equals to 7. क्या है हमारा x plus 2y equals to 7. Any one solution बोला है. तो अगर मैं if x equals to 1 and y equals to, yes x equal to 1 हो जाएगा और y equals to 2 हो जाएगा. Then LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है x plus 2y which is
1 प्लस 2 इंटू 2 नहीं होगा ना, तो x की वैल्यू अगर हम लोग 3 ले लेंगे तो so this will be what, 3 plus 2 2s are 4, 7 to RHS. So therefore x comma y equals 2 comma 2 is one of the solutions of x plus 2y equals to 7. It is one of the solution. It is not the only solution. It is one of the solutions. Okay. Okay, fifth, let's go to the sixth one. S of 5 is 15. S of 6 is 21. क्या बोला है देखो. Sum of 5 AP is 15 and sum of 6 AP is 21. Find the sixth term. बराबर? Yes or no? So we just write that. Okay. So basically, sixth term will be what? S of 6 minus S of 5, which is 21 minus 15, which is 6. So you write hence sixth term is 6. That's it. Got it, बच्चों? बहुत सिंपल थे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, फर्स्ट 6 क्वेश्चंस एक्चुअली. लेट्स अटेम्प्ट एनी 4 बोला है, हम लोग पूरे 6 करेंगे. अब नाउ दीज आर 2 मार्क क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो. Find n if the nth term of the following AP is 66. 3, 6, 9, 12 and so on. कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2. Solve for the first one. ठीक है. क्वेश्चन क्या बोल रहे थे? 66 है. Okay, and this is what 3, 6, 9, 12. देखो AP क्या है? 3, 6, 9, 12 and so on. ठीक है. और ये क्या है? nth term of the nth term is 66. Here we have A क्या है? 3 है. B क्या है? P2 minus T1, which is 6 minus 3, which is 3 again. और we know that Tn क्या है? A plus n minus 1 into D. है कि नहीं? ये हमारा फॉर्मूला है. So what is Tn? Tn is 66 equals to A क्या है? 3 है प्लस n की वैल्यू आपको नहीं पता तो n minus 1 जो है D क्या है? 3 है again. Solve for this. What do you get? 66 equals to 3 plus 3n minus 3. ओके, 3 1 is 3. तो यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों?
Can anything get corrected in this? 3 और minus 3 cancels out. So we are left with basically 3n equals to 66. मैंने बस जगह interchange की है दोनों की. So n equals to 66 upon 3. Yes, 66 upon 3 कितना हो जाएगा? 3 2s are 6 no? N will be 22. That's it. So therefore n is 22. अब देखो क्या दिया है. If one of the roots of the quadratic equation x square minus 7x plus k equals to 0 is 4, then find the value of roots of quadratic equation. मतलब क्या? बेसिकली x की वैल्यू. इक्वेशन क्या है हमारा? x square minus 7x plus k नो. If x square minus 7x plus k equals to, then we just substitute x की जगह पे 4. Okay, so 4 का स्क्वायर क्या है? 4 4 is 16 no? Yes or no? और plus k equals to 0. Okay, so 16 minus 28 नेगेटिव आंसर आता है, नेगेटिव 12 plus k equals to 0. तो k equals to नेगेटिव वो साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, k equals to 4. So एंडिंग में आपको स्टेटमेंट लिखना है, therefore the value of k is, if you want to write it, you just write it in the statement form. ये हो गया सेकेंड वन. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. थर्ड वन क्या बोल रहा है देखो. A box contains 20 cards marked with numbers 1 to 20. One card is drawn at random. Write the event A using the number on the card is multiple of 4. Write sample space n of s, a and n of. ठीक है, तो करते सर. अब 1 to 20 है. इस कार्ड क्या है? 1 to 20. तो सैम्पल स्पेस क्या होगा? थर्ड वन नो. सैम्पल स्पेस क्या है? 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 12. एन ऑफ एस क्या हो जाएगा? 20. इवेंट ए क्या बोला है? द कार्ड drawn is a multiple of 4. ये पूछा है क्वेश्चन में. अच्छा, बाय द वे एन ऑफ एस हो गया, एस हो गया. कार्ड ड्रॉन एट रैंडम, राइट. इवेंट ए यूजिंग द नंबर ऑन द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 वाले कौन से कार्ड है? 4 का मल्टीपल है 4. 4 4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 4 is 16, 4 5 is 20. That's it. तो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? काउंट दीज 1 2 3 4 5. That's it. It was so easy, you know.
ओके, अब क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इफ 3x plus 2y is 15, 2x plus 3y is 10. 3x plus 2y is 15, 2x plus 3y is 10. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर है कि देखो, 3x plus 2y 15 है, पहले 3x है. आई टेल यू व्हाट, वन मेन चीज मैं आपको बता देती हूँ. these kind of these kind of questions are very special, and ऐसे questions में I've solved 2019, 20, 21, 22, 23. 5 साल के अगले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स में सेम क्वेश्चन आ रहे हैं. क्यों सेम टाइप के क्वेश्चंस? देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है. उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में y का जो कोएफिशिएंट है वो नेक्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है. समझ रहे हो? तो इसको कुछ स्पेशल टाइप के इक्वेशंस बोलते हैं. अब इसको पूरा अगर सॉल्व करना हो, पूरा सॉल्व करना हो तो हम लोग एक बार ऐड करते हैं, एक बार माइनस करते हैं. बट हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है तो देखते एक बार ऐड करके देखते हैं. सो एडिंग 1 and 2, what do we get? We will just write this first. Question number 2 का, which question is this? फोर्थ वन ना. नेक्स्ट पेज पे हम लोग तो फोर्थ वन वी राइट कंटिन्यू. ठीक है, सो वी राइट एडिंग equations 1 and 2. we get 1 क्या है, 3x plus 2y equals to 15. एक हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, x माइनस वाई बोला है. ऐड नहीं करेंगे तो रुको जरा, ऐड नहीं करेंगे, माइनस पूछा है. इसमें से बड़ा वाला कौन सा है, 15, 1 ना. so we just write subtracting equation 1 from 2. उल्टा लिख दिया है. equation 2 from 1 उल्टा लिख दिया था. we write 3x plus 2y equals to 15. and now since हम लोग subtract कर रहे हैं, we just draw a line over here, extra line q, because plus becomes minus, plus becomes minus, plus becomes minus. So 3x minus 2x equals to x, 2x minus 3x equals to minus y, 15 minus 10 equals to 4. So therefore it's minus equals to 5. That's it. ये हमको फाइंड आउट करना था. चलो नेक्स्ट. Form the quadratic equation if its roots are 3 and minus 4. जैसे form the quadratic equation if its roots are 3 and minus 4. अब ये तो सोचने वाला है. यस, ये सोचने वाला चीज है. वाई? बिकॉज हम कॉमनली ये करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो, बट फाइंडिंग द इक्वेशन नाउ इज अ बिट डिफिकल्ट. नो, उसके रूट्स क्या है,
इसके रूट्स क्या है 3n-4. Yes, 3n-4. So the roots of quadratic equation are 3 and -4. So that is अल्फा को 3 दे दो एंड बीटा को -4 दे दो वैल्यू, चलेगा? Yes or no? And how do we write a quadratic equation? So this is basically x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals to 0. This is how we write the quadratic equation in a general. So this is what x square minus alpha क्या है हमारा 3 है प्लस बीटा क्या है -4 x प्लस अल्फा क्या है 3 है बीटा क्या है -4 0. So this will become your x square minus 3 plus 3 plus 4 is basically 3 minus 4. This will be your what -1 into x plus 3 4s are 12 and this is negative sign तो ये बच जाएगा -4. So take this will be minus minus plus x plus minus minus 12. This is 0. This is your final quadratic equation. Got it? For a certain frequency distribution, the values of mean and median are given. Find the value of mode. तो क्या आप मीन और मीडियन को फाइंड आउट कर मीन एंड मीडियन को यूज करके मोड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? ये okay. So what is this basically is, for a certain frequency distribution, the values of mean and median are 72 and 78 respectively. Find the value of mode. Okay, so how are you supposed to find this out? Yes, तो basically हमारा क्या है mean minus mode is equal to 3 into mean minus median. ठीक है नहीं? Is this formula correct बच्चों? Yes or no? Is this formula correct? ठीक है, मीन क्या है हमारा 72. जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. मीन क्या है 72 है माइनस मोड जो हमको फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 3 इंटू मीन क्या है आपका 72 माइनस 78. Yes or no? So this mode will become what? Take note. So will be 72 minus mode will be equal to 3 to 72 minus 78 कितना होता है? So 72 minus 78 is how much? Is 3 into minus of 6
ओके, एंड -6 इंटू 3 कितना होता है? -18, बराबर। 72 माइनस 4 -18, तो मोड और -18 को चेंज कर लो, सो योर मोड विल बी व्हाट? 72 minus 18. So your mode will become how much? 54. That is what your answer is. चलो, अब यहाँ पर अटेम्प्ट एनी 3 है, ये अगेन 3 मार्क कर। देखिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होते जा रहे हैं, बस इतना ही पेपर बचा है, ऐसा आपको लगता होगा, और एक पेज है। क्वेश्चन 5 भी है। तो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमारा। For an AP, find S of 10 if A equals to 6 and D equals to 3. Very simple question. S of 10 फाइंड करना है, A 6 है, D 3 है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन, ठीक है नहीं? फॉर्मूला क्या है हमारा? एस ऑफ एन क्या है? एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं? यही फॉर्मूला है हमारा। चलो एस ऑफ 10 फाइंड आउट करना है हमको। सो 10 by 2, 2 times 6 plus 10 minus 1 into 3। so एस ऑफ 10 क्या है? 5 है, 6 2 12 प्लस 9 into 3। ओके, सो एस ऑफ 10 क्या है? 5 times 12 plus 27, एस ऑफ 10 would be 5 times 39, एस ऑफ 10 क्या हो जाएगा? 195। so therefore 12 is 195। okay, then we have solved the following quadratic equation using formula method. 3q square minus 2q equals to 8। इसको पहले तो हम लोग नॉर्मल इसमें कन्वर्ट करेंगे, सो दिस इज 3q square minus 2q minus 8 equals to 0। हियर a क्या है? 3 है, b क्या है? -2 है, c क्या है? -8। और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? x इक्वल्स टू नेगेटिव b प्लस और माइनस द स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ऐसा नो, तो हमारा x क्या बन जाएगा? नेगेटिव b दैट इज माइनस ऑफ -2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c the whole upon 2 times a। x equals to 2 plus minus 2 2 is 4 माइनस, अब इसको कैलकुलेट करो बच्चों, यू बी एबल टू डू इट। 4 times 3
4 3 are 12. Into 8, which is 96. Again, this is negative 8. So negative 96 हो जाएगा. The whole upon 3 to the 6. So x will be 2 plus minus root of 90. 4 plus 96 हो जाएगा minus minus. 4 plus 96 is 100. The whole upon 6. x क्या हो जाएगा हमारा 2 plus minus. Now what is square root of 100? 10. And this will be 6. इसमें ना बच्चों कॉमन निकालो. 2 कॉमन निकालो. ब्रैकेट में बचेगा 1 plus minus 5. 2 1 जा 2 3 जा 6. ठीक है. तो योर वैल्यू ऑफ x, रुको, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे? क्वेश्चन 3 का सेकंड में कंटिन्यू. So the value of x will be how much? 1 plus minus 5 upon 3. So x is either 1 plus 5 upon 3 or 1 minus 5 upon 3. X is either 6 upon 3 or negative 4 upon 3. So that means x is either 2 or, yes, how much is x? Either 2 or negative 4 upon 3, no? That's it. तो क्या फाइंड आउट करना था? रूट्स. फॉर्मूला मेथड से इसे सॉल्व करा था, बस उतना ही. अब बोल रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल. क्रैमर्स रूल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं बच्चों. क्रैमर्स रूल के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं आपके इसमें एग्जाम्स में. लेट्स सॉल्व. हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो 4x plus 3y equals to 18. लिख ले. इक्वेशन 1 है. इक्वेशन 2 क्या है? थ्री एक्स माइनस 2y equals to 5. सब क्रैमर्स रूल यूज करके हम लोग को सॉल्व करनी है, राइट? सो व्हाट विल बिकम d? d क्या हो जाएगा? 4. ये ऐसे कैसे लिखते हैं? नेगेटिव 4. सो अब नाउ व्हाट डू यू डू? just cross multiply. So 4 into minus 2 minus 3 into 3. So this will be 4 into 4, 4 to the 8, minus 8 minus 3 to the 9. This will be minus 7. Yes or no? क्या बोला है? Solve 4x plus 3y equals to 18 and 3x minus 2y equals to 5 using Cramer's rule. ठीक है? तो ये तो मतलब वैलिड रहेगा. अब b of x कैसे लिखना? बाकी है ऐसे का ऐसे लिख दो. x की जगह पर यू राइट 18 है ना? नॉर्मली x कॉमा y लिखते हैं. यस और नो? गेट 18 एंड 5. सॉल्व करोगे. Will you be able to solve this one?
So this is basically 18 into -2 minus 3 into 5. So 18 2 is how much? How much is 18 into 2? 36, and this will be minus 36 minus 36 minus 3 5 is a 15, no? So the answer would be minus of 51. चलो आगे. Let's solve for d of y. D of y would be what? ये 4 और 3 ऐसे कैसे रहेगा, and y की जगह पर क्या आएगा? 18 and 5. So how much would that be? So 15 times 4 minus 18 times 3. Yes or no? So 15 times 4 is, oh wait, this is not 15, this is 5. That will be 20. 20 minus 54. So that will give you what? Minus 34. Now if you want to find x, just go like d of x upon d, which is d of x is minus 51 upon d क्या है? Minus 17 है. ठीक है नहीं? So 17 minus minus तो cancel. 17 3 जा होता है. So therefore x equals to 3. और हमको अगर y फाइंड आउट करनी है तो we write d of y upon d, which is negative 34 or negative 17. Minus minus obviously cancel. What do you get? 2. So therefore this should be, therefore x comma y is 2. So this is your final answer. Next, a die is thrown. Find the probability of the event getting an odd number. A die is thrown और odd number के event का probability हमको चाहिए. This is the 4. A die is thrown तो sample space क्या आएगा? 1 2 3 4 5 and 6. एक die का sample space 6 आएगा and S क्या है? 6 है. Now event, the number on the face is an odd number. odd number ही चाहिए था. ये क्या हो जाएगा? इसमें से odd numbers निकालो. 1 3 and 5. Enough. ये क्या है? So probability of getting odd number is A upon S, which is 3 by 6. So हम लोग फाइनल आंसर क्या लिखेंगे?
Yes. What will we write the final answer as? Therefore, the probability getting odd number is 1 by 2. Ah, got it? The marks obtained by a student in an examination are given below. Total marks out of 100 obtained in the various subjects. So में से below. Represent the above data using pie diagram. देखो यहाँ पर क्या है, टोटल मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन इन वेरियस सब्जेक्ट्स, मतलब ये 75, 85, 100 ये सब मिले हैं बच्चे को 100 में से, ठीक है. एंड इसकी टोटल ऑलरेडी गिवन है 360 डिग्रीज. Now this part, this particular part, I will be drawing here only. Why? Because हमारे पास कंपास नहीं है. Like technically मैं आपको बना के दिखा सकती थी, but how do I represent it using a protractor and all? मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, तो रफ में यहीं पे बता देती हूँ आपको. सो एक तो बड़ा सा जो है सर्कल बना देना एग्जाम में, ठीक है. सेंटर तो आपको मिल ही गया होगा. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस यू ड्रॉ वन रेडियस ओवर हियर, एग्जैक्ट लाइन पे बनाना, ठीक है. 75 डिग्रीज यहाँ कुछ आएगा बिकॉज आपका 90 डिग्री स्ट्रेट है. सो दिस इज 75 डिग्रीज. देन टेक फॉर इंग्लिश, इसके लिए आपका 90 कुछ यहाँ आएगा तो 80 का. ओके, देन यू टेक फॉर 100, आपका 90 यहाँ आ रहा है तो 100 यहाँ. सो अभी क्या करोगे, जस्ट मीन दिस 75 degrees, 85 degrees, 100 degrees and 100 degrees. And what will you name this as? Straight name करो, ठीक है. Capital letters से if possible. इसे टेढ़े मेढ़े करने की जरूरत नहीं है. Okay, that's it. तो मैं इसको एक्यूरेट बना रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं बना रही हूँ. Why? Because I cannot really use a protractor over here. So let's move on to the next question. हमारा next question क्या बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा दिया है 5, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया हुआ है 35. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस whose roots are अल्फा एंड बीटा. Please give me a minute, बच्चों. I don't think a lot of people know about today's lecture. Maybe शायद सब लोगों ने छुट्टी ले ली. Let's move ahead.
if alpha plus beta equals to 5 and alpha cube plus beta cube equals to 35. Find the quadratic equations whose roots are alpha and beta. ठीक, क्वेश्चन 4 का एक. ठीक है, अब देखो अल्फा और बीटा का क्या सीन दिया हुआ है. गिवन क्या है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज 5 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू 35. अब ये टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑब्वियसली. अब देखो क्यूब के फॉर्मूला में अगर हम लोग इसको पुट करें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा plus beta. So this is what basically 35. So alpha plus beta is 5 का cube minus 3 alpha beta or a plus b is obviously 5. So this is 35. Okay, 5 का cube is 125 minus 5 3 is a 50. 15 alpha beta. So what you do? Send this over there. 15 alpha beta क्या हो जाएगा? 125 minus 35. No? Therefore alpha beta 125 minus 35 ये कितना हुआ, 90 upon 50. So therefore अल्फा बीटा क्या है, 6. अब क्यूब का तो कुछ काम नहीं है, बट हाँ प्लस अल्फा बीटा और ये हमारे बहुत काम, अल्फा इंटू बीटा. सो व्हाट यू डू, द required quadratic equation is क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. है ना, ऐसे लिखते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 5 प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 6 है, इक्वल्स टू 0. अच्छे से लिखो इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. चाहो तो मेरे को बॉक्स करो. So the first one is done. Next क्या बोल रहा है देखो, 2 dice are thrown. Find the probability of getting the sum of the numbers on their upper faces is at least 9. The sum of their numbers on the upper faces is 15. The number on the upper faces of the second die is greater than the number on the upper face of the first die. ये तो बहुत है. तो चलो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 4 का सेकेंड. अब देखो 2 डाइस आर थ्रोन ना, 2 डाइस आर थ्रोन. फिर सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा अपना, राइट द सैंपल स्पेस अच्छे से. 1, 1, 2, 3, 4, 5 and 1,6. 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 2,
2, 4, 5, 6. बहुत बड़ा सैम्पल स्पेस हो जाता है इसका, बट लिखना है। लास्ट वन, 3, 4, 5 and 6. और इनफ एस कितना है 36। ओके, तो फर्स्ट वाला लेते हैं हम लोग, लेट ए इज टू सम of the numbers in their faces is at least 9। एटलीस्ट मतलब क्या, एग्जैक्ट 9 नहीं है, एटलीस्ट 9 मतलब 9 मिनिमम होना चाहिए, 9 से ज्यादा चलेगी। ओके, तो ए क्या हो जाएगा हमारा 3,6, तो 6, 7, 8, 9 मिनिमम। 4,5 भी 9 है, 4,6 भी कितना है 10 है, देन 5,4 9 है, 5,5 10 है, then here 5,6 11 है, 6,3 6,4 6,5 6,6 कितना हो गया है ना ए 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा ना ए अपॉन ना एस which is 10/36, which is 2 5s are 15, to 8 ones are 36। क्वेश्चन 4 का सेकेंड इज कंटिन्यू। देखो बी क्या है, let b equals to sum on their faces is 15। ऐसा कोई सेट नहीं क्या, नहीं है। एन ऑफ बी क्या है 0 है, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस 0.36 again which is 0। then let's see is equal to number on the per face of the die is second die is greater than the number on the per face of first die। So which is 1,2, 1,3,
1,4, 1,5, 1,6, then क्या आएगा 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, then आएगा 3,4, 3,5, 3,6, फिर आएगा 4,5, 2,6, फिर आएगा 5,6. ओके, बेसिकली एन ऑफ सी क्या है 15 है, ठीक है नहीं, तो पी ऑफ सी क्या होगा सी अपॉन number of sample space, which is 15, 36, which is 5 by 12. Yes or no? बस यही था हमारा. This was the question. Student A, B, C, तीनों. चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं. यू थिंक आपका हो गया? नहीं नहीं बेटा, नहीं हुआ है अब तक, कुछ नहीं हुआ है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली कमीशन इज रिसीव्ड. हमको क्या करना है, अज्यूम मीन मेथड से फाइंड आउट करना है. अब देखो बच्चों, मीन मेथड तीन होता है. एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है अज्यूम मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड. नाउ नॉर्मली व्हेन दे आस्क यू कि भाई मीन निकालो, जैसा नॉर्मली व्हेन दे आस्क यू कि मीन निकालो, तो अपने ऊपर होता है हम लोग कौन सी मेथड यूज करते हैं. आई नो मैक्सिमम बच्चे जो है डायरेक्ट मीन वाली डायरेक्ट मेथड यूज करने वाले टू फाइंड द मीन. बट डोंट डू दैट. ओके, इफ डोंट डू दैट इफ आपको दिया गया है, अगर स्पेसिफाई किया गया है कि यस बच्चा आपको अज्यूमिंग मेथड से ही फाइंड आउट करना है. क्योंकि बच्चा अगर आपको अज्यूमिंग मेथड से ही फाइंड आउट करने बोला है तो डू नॉट गो फॉर एनी अदर मेथड. वैसे ये पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है. मैंने 2023, 2022, 2021 एंड 2020 लॉकडाउन के बाद से आपके पेपर के लेवल बच्चों इतने इजी आ रहे हैं ना, ये लेवल भी बहुत डिफिकल्ट है पता है आपको. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम तो दे विल नॉट इवन आस्क यू, सोचेंगे भी नहीं वो लोग अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्वेश्चन पूछने का, ये जो यहाँ पे दिया है. चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन. क्या बोला है देखो, frequency distribution of daily commission received by 100 salesmen is given below. Find mean daily commission received by salesman by assuming. So we will try to solve this one. हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा टेबल बना, ठीक है. Okay, so what do you write? This is your daily commission class mark. थोड़ा सा मैंने ये बना दिया.
ब्रॉड बना दिया इसको। तो इसमें कभी छोटे हो। ठीक है, now this would be a bit smaller. So let us write daily permission, then यहाँ पे class, so यहाँ पे देखो दिया 120 दिया ना। क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों के एग्जैक्ट सेंटर में 110, 130, 50, 170, 190। अब इस ये सब, ये जो पूरा टेबल दिया हुआ है, इसके एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर है, 150। दैट इज योर अज्यूम मीन, ए की वैल्यू इज 150। ए क्या है, ओके, एक्स आई है बाय द वे। So 110 minus 150 is minus 40. This will be minus 20, 150 minus 150 is 0. This is 20 and 40 plus 1. सिंपल। अब ये हमको दिया हुआ है, क्या है ये, 20, 45, 22, 20, 45, 22, और इन सब की एडिशन क्या है, 100। ये भी चीज हमको दी गई है, तो हमें क्या करने वाले हैं, 40 into 20, है ना, डी आई मल्टीप्लाई करने वाले, सो विच इज minus 800, 900, 0, 180, 160, और एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, -1360। यस और नो। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन 3 कंटिन्यू देखो यहाँ पे।
ओके, सो अब डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो। क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा? पहले तो डी डैश लिखेंगे हम लोग, दिस इज एफ आई अपॉन विच इज 1360 अपॉन 100, ये माइनस है, दिस इज व्हाट 13.6। ओके, और अब हमारा मीन क्या है? assume mean plus this is 150 plus minus 13.60, which is what? 136.4. So therefore mean is 136.4. ये आपका फाइनल स्टेटमेंट फॉर दिस पेपर। ओके, मूविंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है हमको? एनी टू बोला है, हम क्या करेंगे? ऑल थ्री फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, द क्वेश्चन सेज a boat takes 10 hours to travel 30 kilometers upstream and 44 kilometers downstream, but it takes 13 hours to travel 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Find the speed of the boat in still water and speed of the stream. मतलब x क्या अज्यूम करना है और y क्या अज्यूम करना है, दोनों हमको दिया। yes or no? So let us write it down. This is question number 5 का first one. देखो क्या दिया है, let the speed of the boat in still water be x kilometer per hour and speed of the stream be y kilometer per hour. ओके, तो डाउनस्ट्रीम क्या होगा? Therefore the speed of the boat upstream is x minus y, है ना, अपस्ट्रीम उल्टा जा रहा है, किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम, मतलब पानी के बहाव के साथ जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। ओके, नाउ स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको टाइम पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड और टाइम को हमने इंटरचेंज कर लिया, डजंट रियली मैटर। सो व्हाट यू राइट? सो देयरफॉर टाइम टेकन, पहली कंडीशन, by the boat to cover 30 kilometer stream is 30, डिस्टेंस 30 है, अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है? माइनस कितने आवर्स, एंड द टाइम टेकन by the boat cover 24 kilometers downstream
इस डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x प्लस वाई आवर्स, ठीक है। बट इनका टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, बट टोटल टाइम is given as अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाके आने के लिए 10। नेम दिस एज कंडीशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलरली लिखेंगे बाय सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन से क्या दिया हुआ है बच्चों हमको, 30 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 55 अपॉन, क्वेश्चन क्या था हमारा, 30 अप 40 डाउन, 40 अप 55 डाउन, 40 अप 55 डाउन है, तो x प्लस इक्वल टू 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हाट डू वी डू, substituting 1 upon x minus y equals to a and 1 upon x plus y equals to b, we get दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लो, we get 30a plus 44b equals to 10, third equation, and fourth equation आपको मिल रहा है 40a plus 55b, ओके। इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि वैसे तो हम लोग को कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है ना। इक्वेशन, इतने मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों। क्वेश्चन 3 into 4 and equation 4 into 3, we get so 120a plus 176b is to 40. Again 120a plus 165b 39. Now equation 5 minus equation 6, we get, करो सब्ट्रैक्ट करो, 120a plus 176b is to 40 minus 20a is 165b. So 120 gets cancelled out. What are we left with? 11b. 11b equals to 1. तो b क्या है, 1 upon 11. और ये सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूटिंग b equals to 1 by 11 in
equation 5. We get 128 plus 176 into 1 by 11 is to 40. It's basically 128 equals 24. A is equal to 24 upon 120. A is equal to 1 upon 5. अभी क्या करना है? अभी हमको रीसब्स्टिट्यूट करना है. So we write question number 5 1. Continue. So what do we do now? 1 upon x minus y क्या है? 1 upon 5. And 1 upon x plus y क्या है? 1 upon 11. So therefore x minus y equals to 5 and plus y equals to 11. So यहाँ पे क्या है? x plus y equals to 11. x minus y equals to 4. दोनों को ऐड कर दो. By the way 7 और 8 होगा इक्वेशन. Adding equations 7 and 8, we get x plus y, x minus y. We cancel out 2x equals to 11. 11 plus 5 होता है 16. X is 16 by 2, which is x is 8. Substituting x equals to 8 in कोई भी इक्वेशन में डाल दो. इक्वेशन इसमें पुट करोगे 7 में. We get, what do we get? x plus y equals to 11. 8 plus y equals to 11 हो गया. तो y equals to 11 minus 8. तो y equals to 3 मिलता है. x 8 है, y 3 है. So what do we write in the end? Therefore, the speed of the boat still water is 8 km per hour and speed of stream is 3 km per hour. That's it. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5. देखो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट किया हुआ है. ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ना. yesterday we did a paper on 2022, उसमें भी था. before that we did a paper on 2020, उसमें भी था. रिपीटेड क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है. If the ninth term of an AP is 0, then prove that 29th term is double of 19th term. ये बहुत easy है. We'll try to solve this. यहीं पे नीचे छोड़ने की जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है. Start writing from your also. पहले तो हमारा टर्म वाला फॉर्मूला क्या है? बोलता है a plus n minus 1 into d. ओके. नाइन्थ टर्म के लिए दैट इज n इक्वल्स टू 9. p of 9 क्या है? a plus 9 minus 1 into d. So
9 टर्म तो 0 हमको दिया हुआ है, सो दैट मीन्स व्हाट, a plus 8b equals to 0. ठीक है, so let's take the next one. We take 29 term, that is t of 29, where n equals to 29. ठीक है, therefore t of 29 क्या है, a plus 29 minus 1 into d, which is a plus 28d. So can I write this as a plus 8d plus 20d? और हमको पता है a plus 8d क्या है, 0 है, इक्वेशन 1 दे देते इसको. Reason from, so this is what, so therefore T29 equals to 20d. अब देखो 19th term, 19th term, that is T of 19, where n equals to 90. Okay, so T of 19 क्या हो जाएगा, a plus 19 minus 1 into d, a plus 18d, which is a plus 8d plus 10. अब यहाँ पे आएगा कैच क्या है हमारा, a plus 8d क्या है, 0 है ना, 0 plus 10d from 1. तो T19 क्या है मेरा, 10d है. एंड में क्या लिखोगे, और इसको ना नाम दे दो 2. So we write by equation 2 and 3, what do we get, we have 29 equals to 2 times T of 19, डबल है ना, so that's it, hence proved. फेवरेट स्टेटमेंट है बहुत बच्चों का, मेरा भी फेवरेट है, hence proved. चलो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना. ड्रॉ अ हिस्टोग्राम and the frequency polygon on the same, obviously same पे ही बनाएंगे. यहाँ पे देखो कितने कॉलम दिए हुए. हमारा कैच क्या है, अगर 20 पे खत्म हो रहा है तो देखो 20 पे स्टार्ट हो रहा है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी. इफ नॉट देन वी विल हैव टू मेक अ कॉलम. यहाँ पे बहुत सिंपल चीजें हैं, तो वी डोंट हैव टू मेक अ कॉलम. ठीक है, क्लास दिया है, चुपचाप से फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम ड्रॉ करें. लेट मी चेक यहाँ पे हेल्प करें. और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 मैक्स है. So we'll try to draw. ठीक है, गलती से हो, देखो यहाँ पे ठीक है. So what do we do, 50 max है ना, this is 5, 10, 15, 20, 25,
30, 35, 40, 43, ठीक है। और लेट अस स्टार्ट विद दिस। क्लासेस किस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे? 15 से लेकर 5 5 की क्लासेस। राइट 10, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रब कर देंगे, क्यों? एंड वी ड्रॉ दिस स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर। यहाँ पे 15 स्टार्ट हो रहा है, 3 3 के क्लासेस लेंगे हम लोग। 15, 20, 25, ऐसे ही ना क्लासेस। 15, 20, 25, 30, 45 तक जाएगा। फोर्टी, 45, एकादा एक्स्ट्रा लिख ही ले लो। यहाँ पे भूलना मत, नेमिंग करना y x x डैश, y ऊपर y डैश आएगा, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? पहले वाली की फ्रीक्वेंसी क्या है? 20, 30, 50, ठीक है। सो विल ड्रॉ नाइस मस्त रेक्टेंगल। ये 20 तक ही है, 25 से शुरू करेंगे। ये 30 वाला ही है, ये पूरा 50 तक जाएगा ना। अब नेक्स्ट वाली क्या है? फ्रीक्वेंसी 20, 30, 50 हो गया। 40, 25, 10, यहाँ पे 40, 25, 25 कहाँ है यार? 10, थोड़ा मोटा हो गया ना ये, अच्छे से बना। 25, 10। सो नाउ ये हो गया है। अभी क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाओगे? मैं बताती हूँ। एक आगे और एक पीछे अज्यूम करो कि जीरो फ्रीक्वेंसी वाले हैं, ठीक है। और इसके एग्जैक्ट सेंटर में मार्क कर दो। हर एक के जो बार बनाया है उसके टॉप में सेंटर में मार्क कर दो। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या है? 45 टू 50, उसका सेंटर में मार्क करो। इसका प्रीवियस क्या है? ये इसके सेंटर में मार्क करो। Now what do you do is you just have to draw one line. इसके सेंटर से लेके यहाँ तक, इसके सेंटर से लेके यहाँ तक, just draw one line. Oh, that's it. हो गया हमारा हिस्टोग्राम भी बन गया। ये जो हमने बार्स बार्स बनाए, ये सारे हमारे हिस्टोग्राम थे। और ये जो है, जो डोंगर जैसा बनाया है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन।
अब हो गया, अब यहाँ पे स्केल लिखो। स्केल on x-axis 1 centimeter equals to 5 units, no? And on y-axis 1 centimeter equals to 2.5 units. और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वन ना, इसको भूलना मत, यहाँ पे जगह है नहीं, राइट। ऑन, ठीक है। गॉट इट गाइस, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम लोगों ने पेपर कैसे कैसे सॉल्व किया है। वी सॉल्व एवरीथिंग। अब सिस्टमैटिकली कैसे सॉल्व किया देखो, हर एक क्वेश्चन रफ वर्क है कुछ तो साइड में कॉलम छोड़ के करना है रफ वर्क बच्चा। वी हैव टू राइट एवरीथिंग वेरी वेरी सिस्टमैटिकली। देखो हर एक क्वेश्चन नंबर कैसे लिखा है। ओके, यू डोंट हैव टू ड्रॉ एनी एक्स्ट्रा लाइंस, कुछ डिजाइन डिजाइन करते बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेन चीज जहाँ पर है उसको बॉक्सेस बनाओ। ओके, अब इक्वेशंस ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, एक के नीचे एक अच्छे से लिखो। लीव लाइंस, बहुत पेपर्स होते हैं अपने पास, लीव लाइंस। ओके, सो दिस इज हाउ यू शुड रिप्रेजेंट। फॉर्मूला है, फॉर्मूला को बॉक्स में डालो। अगर कहीं पे कंटिन्यूड है नेक्स्ट पेज पे तो क्वेश्चन नंबर लिख के कंटिन्यूड लिखना, सो दैट टीचर को भी समझे ना कि क्या कंटिन्यू हो रहा है। यप, दैट्स इट। कुछ भी डाउट्स है बच्चों इस सब के रिगार्डिंग, प्लीज लेट मी नो। इफ यू गाइस हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो। नो, सो दिस इज हाउ यू शुड टेक्निकली सिस्टमैटिकली ऐसे कुछ पेपर लिख लेना चाहिए। दैट्स इट। एंड ग्राफ पेपर। Since बच्चों you guys don't have any doubts, so I think we should end the lecture now. Okay बच्चों, कुछ भी डाउट हो तो फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। सारे लिंक्स टेलीग्राम की वो सब लिंक्स बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। आपके स्पेशल क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपके फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। बूस्टर बैच है क्लास 9 के लिए एज वेल एज क्लास 10 के लिए, सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। ओके, एंड आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन एंजॉय किया हो तो लाइक कर दो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।